भाई सिर्फ 20-25 मिनट और देन उसके बाद जो आपका लाइव है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 20 एक मिनट हम जितने भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ साझा या शेयर करेंगे। तो अब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप लोग मुझे साथ के साथ लिख के बताते रहिएगा। जो अपनी बेसिकली लाइव है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। एंड अब आज लॉन्च होगा कि नहीं, अखिलेश कुमार गुप्ता भाई कह रहे हैं आज लॉन्च होगा कि नहीं। 100% लॉन्च होगा। बस 20 मिनट और फिर जो जितना भी लाइव वगैरह के स्ट्रीम कीज़ हैं सारी जो हैं हम लोगों के सामने आ जाएगी। तो वो भी हम लोग जो है आप लोगों को सारी की सारी चीज़ जो है वो शेयर करते रहेंगे। बट जब तक है आप लोग डाउट पूछ सकते हो और डू लेट मी नो कि आप लोगों को जो है हमारी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, ओके आ रही है, ठीक है। तब तक आप लोग जो है मेरे साथ रहो। फटाफट लाइक कर दो यार और नीचे कमेंट ही कमेंट्स कर दो। तो 20 एक मिनट और जो जो डाउट्स आप पूछ सकते हो। मैं आपका भाई हर्ष, थोड़ी देर में हम लोग लाइव इधर ही आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे। खैर अब डाउट्स वगैरह नहीं आए कुछ, मैं खुद ही बता देता हूँ आप लोगों के साथ ही साथ। देखो गाड़ी की जो वीडियो है काफ़ी दिन से लीक वगैरह हो रही थी और अपने एक अंकल है उनकी तरफ से भी आई थी गाड़ी की वीडियो। फिर वो हम लोगों ने भी रिमूव कर दी थी और मेरे कुछ फेलो यूट्यूबर्स हैं उनने भी रिमूव कर दी थी। बट द थिंग इज़ कि गाड़ी वैसी वैसी रहने वाली है। एंड एनी आइडिया अबाउट द प्राइजेस देखो, जितना मेरे को चारू कुमार महाजन जी बोले प्राइजेस जितना मेरे को आइडिया है कि जो आप लोगों को GST 2.0 बेनिफिट मिले थे शायद उसी के पास जो हैं इसके प्राइजेस भी रखे जाएंगे। अच्छा आप लोग एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि बेसिकली जो अपनी जितनी भी ब्रांड्स हैं या जितनी भी कंपनीज हैं उन लोगों ने फेसलिफ्ट धड़ाधड़ निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे पता क्या लगता है कि इन लोगों को जीएसटी प्राइस मैच करना था एंड जीएसटी प्राइस मैच करने के लिए इन लोगों ने फेसलिफ्ट वगैरह निकाला। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बट हाँ, छोली के पीछे कुछ भी हो सकता है। खैर ये सब छोड़ते हैं। व्हाट इज ही सेइंग, विल XUV 700 कम बैक? नहीं, XUV 700 डिसकंटिन्यू हो जाएगी आज से। इन केस अगर आपको सेल्स पे अपनी सेल पे अच्छी खासे पैसों में डिस्काउंट में मिल रही है तो आप लोग जो है वो भी ले सकते हो। उसमें मिल जाएगी आप लोग, ठीक है। हेलो हुज़ैफा मिर्ज़ा भाई, हेलो 700 अगेन आनी चाहिए भाई प्लीज़। तरुण पाठक भाई नहीं आएगी, XUV 700 नहीं आएगी, मैं आपसे बता रहा हूँ XUV 700 नहीं आने वाली, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। महिंद्रा XUV 3XO भी कहाँ, 300 भी कहाँ ही। तो बेसिकली महिंद्रा को करना ये था कि इन लोगों को अपना 100 नाम चेंज करना था, तो वो 700 से हट के 7XO हो गई है। टाटा पंच 13 जनवरी। महिंद्रा ने ये गलत किया है भाई। देखो तरुण भाई, अब ये है अपने सुप्रीत भाई पूछ रहे हैं विल XUV 700 का बैक? नहीं, XUV 700 नहीं आएगी। अपने तरुण भाई कह रहे हैं महिंद्रा ने गलत किया। देखो भाई महिंद्रा ने गलत नहीं करा, लेट मी टेल यू कि ये तो सृष्टि का नियम है। जैसे अब टाटा मोटर्स भी साथ साथ अपडेट करते रहते हैं तो महिंद्रा को भी अपडेट करना पड़ा। महिंद्रा ने गलत। अब ये देखो बात तो सही है कि आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं XUV 700 से और आपको वो गाड़ी अच्छी लगती है। बट 7XO इज़ न्यू थिंग जिसके साथ आप लोगों को अब अपना लाइफ गुजारनी पड़ेगी। दिस इज़, ये मैं कहना चाहूँगा। XUV 700 वर्सेस 7XO में बेटर कौन सा है? देखो अभी अगर हम बात बोले ना, मैं आपको एक बहुत सरल शब्दों में चीज़ बताता हूँ। जितने मेरे भाई जुड़े मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर में लाइव हम लोग स्टार्ट कर देंगे, निराश मत होइएगा। बस 20 एक मिनट में लाइव जो है स्टार्ट हो जाएगी एक्जैक्टली गाड़ी की। XUV 700 कम बैक नहीं आएगी भाई। हाँ, XUV 700 वर्सेस 7XO में आपको बता देता हूँ एक चीज़। 700 वॉज अ गुड प्रोडक्ट, इतने साल से आउटडेटेड नहीं लग रही थी। 7XO अभी के टाइम पे आपको थोड़ी सी अजीब सी लग सकती है कि भाई ये क्या गाड़ी बना दी है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वो जो गाड़ी है अपनी XUV 7XO, वो थोड़े टाइम में आपको आंखों में ठीक दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ ठीक प्रोडक्ट है। इंटीरियर थोड़ा सा शायद आप लोगों को ऐसा लगे कि यार कैसा ऑरेंज टाइप सा है, बट वो भी आप देखोगे तो ब्राउन और वो कलर का जो ट्रीटमेंट है वो ठीक ठाक आ गया है। वेलकम XUV 7XO आने वाली है। करण रजिता भाई कहते हैं हेलो हर्ष भाई, हेलो भाई, हेलो भाई। भाई 100 नहीं चेंज करना था शायद। देसी स्पीच भाई कह रहे हैं भाई 100 नहीं चेंज करना था। नहीं भाई, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। आपको पता हो ये टिवोली करके बाहर आपको मतलब एक ब्रांड है, उनके साथ ये लोग कुछ इनका एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूँ, कुछ 100 प्लेटफॉर्म ये शेयर करते थे। तब वो 300 आई थी, ये सारी चीज़ें थी, तो इनको नाम तो चेंज करना ही था। वो हमेशा आपको महिंद्रा की हर गाड़ी में मिलेगा। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी भी बताएंगे। स्कॉर्पियो, बुलेरो, 7XO, 3XO, तो ऐसे टाइप। बस एक थार ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें उनने ओ नहीं लाया, और थार रॉक्स में भी वो ओ कहीं ना कहीं ऐड करते हैं, ये चीज़ ठीक है।
सब लोग बोलो महिंद्रा 7 होना चाहिए, नहीं भाई 700 डिसकंटिन्यू हो चुकी है, होना चाहिए नहीं, हो गई है भाई। वो भाई टाटा सफारी वर्सेस एक्सयू 700 कौन सा बेस्ट है? देखो यार, मैंने अभी टाटा सफारी चलाई थी तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगी चलाने में, पेट्रोल में। और रही बात कि बेटर कौन सी है, तो लेट एक बार 7XO आ जाए प्रोडक्ट, फिर भी विल सी कौन सी बेटर है कौन सी नहीं है। भाई विल बी परचेज 7XO, बहुत अच्छी बात। लो लॉन्च कब होगा? टाइम बस भाई 20 से कितना टाइम हो गया अपना, 13 मिनट में लॉन्च होने वाला है, 13 या 14 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। टाटा सफारी वर्सेस एक्सयू 700 कौन सा बेस्ट है बता दिया। विल परचेज 7XO, ले लो भाई। देसी स्पीच 7XO एक शायद स्ट्रैटेजी है, नहीं एक्सो भाई इनको लगाना ही था हमेशा अपना। 3XO भी जैसे आया 7XO भी वैसे ही आया है। हेलो 7XO 9XL, हाँ 9XL का वेरिएंट का नहीं पता, AX7 तो आ गया था, 9XL आएगा शायद, भगवान करे 7XO आगे ना बढ़े यार। भाई किसी कंपनी में करोड़ों रुपए लगे हैं ऐसे तो मत बोलो ना। विल व्हेन विल द डिलीवरी स्टार्ट? फेब से स्टार्ट है एक्सपेक्टेड, टाटा सेरा के आसपास। फॉग लैम्प बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, हाँ काफ़ी नीचे लगा दिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एक्सयू 7XO कब तक डिलीवर हो जाएगा? फेब से मोस्टली। महिंद्रा साली कम, ओ शिट मेरे से गाली मत दिलवाओ भाई। 7XO और सफारी विच इज बेस्ट ब्रो? भाई देखो, सफारी में अपने अलग फीचर्स हैं और 7XO में अपने अलग फीचर्स हैं। इन दोनों गाड़ी का कंपैरिजन नहीं, अगर आप मेरे से कोई थर्ड पार्टी और कार पूछते एज इन किसी और कंपनी की किया कारेंस वगैरह, तो मैं आपको बता पाता। बट ये दोनों प्रोडक्ट अपने आप में अच्छे हैं। और मैंने 7XO भी चलाई, मुझे वो भी दमदार लगी, और सफारी भी चलाई, वो भी दमदार लगी। इन टर्म्स ऑफ लुक्स आई बिलीव कि भाई टाटा सफारी थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव आती है, 7XO मोर फैमिली कार बन जाती है ना। भाई महिंद्रा के हर कार में ओ क्यों आता है? भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी बताएंगे महिंद्रा वालों को। मैं आपको ना एक रील में बनाऊंगा, अभी पता नहीं शायद मैं शेयर कर पाऊँ ना कर पाऊँ, बट मेरे से किसी महिंद्रा वाले ने बताई थी कि इनकी जब गाड़ी वगैरह नहीं सेल हो रही थी, चलो फिर बताएंगे आपसे। इज इट इलेक्ट्रिक कार? नहीं इलेक्ट्रिक कार नहीं, इलेक्ट्रिक तो आ चुकी है ना ऑलरेडी। वो चोरो महिंद्रा 7XO हटाओ बस। अरे यार प्राइस प्लीज़ भाई, प्राइस अभी कुछ नहीं है। आई हैव परचेज 600 बैक विल गेट इन सम डेज टू टाइम। हाँ भाई, अगर डिलीवरी नहीं मिली है चरण कुमार महाजन जी, आप तो वेट कर लीजिए। और अगर आपको लेनी ही है X5, तो मैं आपसे बस एक चीज़ बोलूँगा कि गेट ह्यूज डिस्काउंट, ज़बरदस्त वाला डिस्काउंट लो आप। अगर बहुत भयंकर डिस्काउंट मिल रहा है तो ले लो गाड़ी, नहीं तो आपकी गाड़ी लगा लो ना, 5 साल डायरेक्ट आउटडेट हो जाएगी यार। हेलो ब्रदर, आई एम प्लानिंग टू बाय हैरियर पेट्रोल 7XO टॉप मॉडल, विच शुड आई गो फॉर? प्लानिंग टू बाय हैरियर पेट्रोल और 7XO टॉप मॉडल, विच शुड आई गो फॉर? देखिए 7XO में आप पेट्रोल ले रहे हो तो मत जाइए 7XO के साथ। रीजन बिंग महिंद्रा बहुत ज़्यादा तेल पीती है। उनका जो इंजन है एम स्टाइलियन, एंड हमारा जो टाटा सॉरी ये टाटा हैरियर है। टाटा हैरियर में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टाटा हैरियर जो है उसका पेट्रोल मैंने चलाया था, इन अराउंड 14-15 माइलेज आ गई थी, तो आप वो गाड़ी ले सकते हो, ठीक है भाई। डिड यू ड्राइव ए 7XO ऑलरेडी? नहीं भाई, सुप्रीत भाई अभी तक नहीं चलाई है 7XO, जैसलमेर में है भाई। शायद एक्सो स्ट्रैटेजी है जो महिंद्रा ने बनाई है मोनोकॉक एसयूवीज के लिए, और लाइटर ऑन फ्रेम के लिए पुराना नाम है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर आपकी एक्सो स्ट्रैटेजी चलो मैं मान लेता, तो 300 भी रहनी चाहिए थी, 3XO भी। लेट्स वेट, देखते हैं कि मेरे हिसाब से 700 डिस्कंटिन्यू हो चुकी है, फॉग लैम्प की वजह से लुक नहीं आ रहा। ब्रो बैक स्क्रीन अवेलेबल इन विच वेरिएंट 2? बैक स्क्रीन तो टॉप एंड लाइन में ही जाएंगी सर। प्राइस प्लीज़ अभी नहीं आया ब्रो बैक, प्राइस आज तो आएगा भी नहीं शायद से। पॉप XUV7 बेटर देन टाटा कार्स, 7XO टॉप मॉडल डीजल और इनोवा हाई क्रॉस। इनोवा हाई क्रॉस फॉर कंफर्ट, 7XO टॉप मॉडल फॉर फीचर्स। प्राइस भाई कब तक चालू होगा सर? भाई बस कितना देर होगी, अब लगा लो अगले 10-1 मिनट में लाइव चालू हो जाएगा, फिर मैं हट जाऊँगा यहाँ से। भाई होंडा जैज़ वापस आएगी? होंडा की 0 सीरीज़ कार आने वाली है। हाइब्रिड कार है क्या? नहीं हाइब्रिड नहीं है सर। 5 सीटर में एसयूवी बताइए, अंडर 20 लाख, पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिक। देखो भाई 5 सीटर में आई गो विद हैरियर पेट्रोल, टाटा सफारी पेट्रोल एंड XUV 700, ये तीनों गाड़ियों में आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट पेट्रोल मत लेना, अगर आपकी पेट्रोल ही रिक्वायरमेंट है तो डोंट गो विद पेट्रोल। हाँ मेरे को भी ऐसा लगा 3XO एंड 7XO जो डिज़ाइन है ना, वो थोड़ा सा रेवेक्स एडिशन टाइप दे दिया है। कितने बजे लॉन्च होगी आज? बस होने वाली है 10 मिनट में, फिर हम हट जाएंगे। कैन आई बाय XUV 700 ले लो, अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है आप पिक्का ले सकते हो। XUV 700 की प्राइस कितनी होगी सर? प्री GST जो प्राइस आए थे वैसे ही मैच करने की कोशिश करेगी कंपनी। भाई मेरे पास स्विफ्ट 2014 है, वो मॉडल अच्छा है क्या? सर बहुत बढ़िया है स्विफ्ट 2014, टाइप 1 मेरी फेवरेट थी। भाई व्हाट अबाउट टाटा हैरियर पेट्रोल? इट्स अ गुड कार, बहुत अच्छे सारे फीचर्स हैं। हम लोगों ने भी जो नई वाली आई थी उसका ड्राइव रिव्यू भी डाल रखा है, आप देख सकते हो जाके। भाई फ्यूल टाइप कौन सा बेस्ट होगा 7XO में? गो विद डीजल, पेट्रोल मत जाइएगा भाई, पेट्रोल मत जाइएगा, बता रहा हूँ डीजल के साथ जाओ। भाई बुलेरो 2026 कब आएगी? 2027 के लिए पोस्टपोन होगी है। 7XO वर्सेस सफारी पेट्रोल 600 किलोमीटर रनिंग ऑनली। 600 किलोमीटर अगर मंथली रनिंग है तो आप 7XO भी कंसिडर कर सकते हो, बट
एक बार वेट करो प्राइस क्या आ रहा है, क्योंकि सफारी का और पेट्रोल हैरियर का मैंने प्राइस सुना है काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। भाई और वीडियोस आर द बेस्ट, थैंक यू अर्जुन भाई। बोलेरो व्हेन इट इज़ कमिंग, 2027 में आएगी बोलेरो भाई। एक शोरूम प्राइस क्या होगा? एक शोरूम प्राइस वही होगा जो आप लोगों को प्री जीएसटी मिला है, ये मेरा अभी तक का एनालिसिस कह रहा है। राहुल होंडा है 7XO प्राइस भाई अभी कुछ नहीं आया, लोगों का लॉन्च है, थोड़ी देर में लॉन्च है 7XO पेट्रोल और सफारी पेट्रोल। यू गैस कैन गो विद सफारी पेट्रोल। 7XO पेट्रोल मैं इसमें रिकमेंड नहीं करता, उस गाड़ी की माइलेज बहुत खराब है, अगर माइलेज से दिक्कत नहीं है तो जा सकते हो उसके साथ। आई डिडंट लाइक टू फोक एंड लुक्स ऑफ 7XO इज नॉट दैट अग्रेसिव इन लुक्स ऑफ एस ऑफ नाउ। हाँ 700 थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव थी, बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, आपको ना थोड़े दिन बाद ये जो गाड़ी है इसके लुक्स अच्छे लगने लग जाएंगे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ जो मैंने इस गाड़ी को देखा है। कैन आई बाय? यस यू कैन बाय, थैंक्स बता दिया। बाय इलेक्ट्रिक अच्छी रहेगी या पेट्रोल वाली महिंद्रा अच्छी रहेगी, प्लीज़ बोलो ना भाई डिटेल में। देखो भाई इनकी जो XUV 700 पेट्रोल सॉरी इलेक्ट्रिक में आई है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसके बेस एंड मॉडल से काफ़ी सारी चीज़ दे दी। बट अगर आपको यूँ लगता है कि आपको एनजाइटी नहीं होगी, आपको ऐसा डर वर नहीं सताएगा अपनी बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक खत्म हो जाए, ईवी चार्ज खत्म हो जाए, तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छी गाड़ी है। बट मैं एज अ पर्सनल बायर हमेशा आइस यानी कि पेट्रोल डीजल पे ही जाना पसंद करूँगा। क्या 700 डबल स्क्रीन में भी अवेलेबल होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी, नीचे वाले मॉडल से। भाई पेट्रोल हैरियर वर्सेस 7XO डीजल विच? भाई पेट्रोल हैरियर भाई वापस वही चीज़ है जितने मेरे भाई पूछ रहे हैं। तो पेट्रोल में हमारी जो सफारी ने 1.5 टाटा ने 1.5 लीटर इंजन निकाला है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, पावर भी अच्छी है, 190 पे बहुत अच्छा चला रखा है मैंने, और उसकी माइलेज भी ठीक ठाक जो आपको मिल जाती है। 7XO की मैंने सुनी है 5, 6, 7 के आसपास आती है, तो वो वाला फैक्टर जो आप लोग कंसीडर थोड़ा सा देख के करिएगा। भाई इंडिया में होंडा जैज़ क्यों नहीं चलाई, इतनी अच्छी कार है? भाई इंडिया में ना होंडा जैज़ जिस टाइम आई थी उस टाइम लोग जो हैं इतना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। खैर गाइस आप लोग भी ग्रीन टी पी सकते हो मेरे साथ, मेरे जितने भाई हैं, मैं पी लेता हूँ, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है इसलिए माफ़ करिएगा। वो भाई लाइव में ही चाय पी रहा है, आप लोग पी लीजिए लो पहले आप लोगों को। हाँ तो विजन SS बोलेरो 2026, हाँ जी वही है। इज इट गुड टू डील टू बाय XUV 700 नाउ टॉप एंड? हाँ जी ले लो, अच्छी बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 700 काफ़ी अच्छी दिखती है अभी भी, आप ले सकते हो और डिस्काउंट भी अच्छा। 7XO वर्सेस सफारी पेट्रोल, देखो सफारी पेट्रोल इज़ अ परफेक्ट कार, मैंने चलाई है, उसमें फीचर्स भी भर भर के दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई वो गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी आज 7XO आ जाए उसके प्राइस देखते क्या आएंगे। XUV 700 2026 तक लेना ही मिल जाएगी सर, 2027 तक तो नहीं मिलेगी जितना मुझे लग रहा है, आज ही डिसकंटिन्यू वाली है। 7XO के मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसका कंसिडर करना चाहिए। देखो अभी क्या मिक्स रिव्यूज़ पे तो आप ट्रस्ट करिए ही मत ना, अभी तो गाड़ी लॉन्च हुई नहीं है। फाइनेंस विद महेश ममता, अगर आप अभी रिव्यू गाड़ी लॉन्च हो जाए उसके बाद कमेंट्स वगैरह पे देखो, आप इतना ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपको एक सही चीज़ बताता हूँ, अगर आपको गाड़ी लेनी है आप गाड़ी शोरूम में जाओ, चलाओ, देखो, फील करो। रीज़न मीइंग आपको 26 लाख रुपए अपनी पॉकेट से खर्च करने हैं ना। अगर आप एक नेगेटिव कमेंट देखते हो गाड़ी के बारे में तो उस कमेंट से आपको 100 रुपये का डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो जाओ शोरूम में बैठो, देखो, तब आपको समझ में आएगी, है ना। बेस्ट वीडियो, थैंक यू जी। भाई रनिंग कम है तो फिर भी डीजल, क्या बात कर रहे हैं भाई? मैंने कब कहा रनिंग कम है तो डीजल? पेट्रोल में जाओ, अगर रनिंग कम है, आपने मेरे से दोनों पेट्रोल का ही पूछा था ना सर। आप मेरा नाम लो, प्रतीक कद्दू भाई, प्रतीक कद्दू। सर थार का फेसलिफ्ट आएगा? थार 3 डोर का फेसलिफ्ट 100% आने वाला है, विशाल शर्मा भाई ने पूछा है। थार 3 डोर का 100% फेसलिफ्ट आएगा। अगर थार 3 डोर ले रहे रुक जाओ भी भाई। 7XO बेटर है लुक्स में, डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है। मैकेनिकल कोर्स इन हेलो जी। आई डोंट लाइक टू फोक एंड फोक्स ऑफ सैनस नॉट अग्रेसिव लुक्स ऑफ मे बी। गुड नाइट, गुड नाइट। अभी से XUV 700 XY की मिल रही है डिस्काउंट के बाद, सर ले लो, बहुत अच्छी डील है। आर डीजल कार द रिस्क ऑफ बीइंग बैंड इन द नेक्स्ट 2 years? नहीं श्याम सर, ये डीजल कार बैन नहीं होंगी। जो आपको पता है, मैं आपको बताऊं, जो डीजल लॉबी है ना, बेसिकली ट्रक वाली लॉबी है, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आप सोचो ट्रक्स, इतना इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रक्स चलते हैं, आपको पता है। अगर डीजल बैन कर दिया तो ये ट्रक्स कैसे चलेंगे? तो अपना जो डीजल है वो नहीं बैन होने वाला, ये आप थोड़ा। शुक्रिया भाई लाइव, थैंक यू जी, थैंक यू। लाइव दिखाने वाला था ना, क्या बोल क्यों रहा है? अबे तो लाइव मैं कहाँ से स्टार्ट कर दूँ अपने आप? जब लाइव स्टार्ट होगी तभी तो करूँगा भाई। ध्रुव लपाते, टाटा सफारी पेट्रोल कैसी है? बहुत बढ़िया गाड़ी है, मैंने चलाई, अच्छी है। टाटा सफारी पेट्रोल वर्सेस डीजल विच इज़ बेस्ट? पेट्रोल अच्छी लगी मुझे, पिकअप वगैरह में। डीजल का टॉर्क लो एंड अच्छा है, बट फिर भी वो बढ़िया है। इनको तो भाई अपने को हटाना पड़ेगा, रीज़न बीइंग इनने बहुत ज़्यादा वो कर लिया, स्पैम कर दिया है। हाँ, इनोवा क्रिस्टा का न्यू मॉडल आएगा 2026 में। सर इनोवा हाई क्रॉस, इनोवा क्रिस्टा अभी के लिए डिसकंटिन्यू कर दिए, सिर्फ इनोवा हाई क्रॉस मिलेगी। लेट्स सी इनोवा क्रिस्टा का मॉडल आता है नहीं आता, बट हाँ हाई क्रॉस है अभी के लिए।
क्रिस्टा जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ जी, कर दिया मैंने उसको ब्लॉक, बहुत ज़्यादा वो कर रहा था। इस किफ 3 इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, नो डीजल विल डिसकंटिन्यू। किफ 3 इनोवा तो हो चुकी है सर, डिसकंटिन्यू तो होगी अपनी इनोवा क्रिस्टा, है ना। अब मैं एक बार आप लोगों की लाइव के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, क्योंकि लाइव जो है वो स्टार्ट होने वाली है अपनी पीछे। और लेट मी डू वंस फॉर यू। ओके, अभी लाइव बस 10 एक मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, फिर जो है हम आप लोग अपने डाउट्स लिखते रहिए। मैं जो है आपके लिए बस लाइव को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को भी लाइव पे मज़े मिल जाए। डाउट्स लिखते रहिए, डाउट्स लिखते रहिए सर। आगे भाई स्विफ्ट 2000 में अच्छी है, स्विफ्ट 2025 सर। स्विफ्ट अब देखो, ये तो ध्रुव जी बहुत अलग सा कंपैरिजन हो गया, बट दोनों अच्छी हैं अपने में। सेरा पेट्रोल वैसे सेरा डीजल, फ्रैंकली बताऊं, फ्रैंकली बताऊं, सेरा पेट्रोल का जो पिकअप था टर्बो का, 1.5 लीटर इंजन, ओ हो। डीजल वाज आल्सो गुड, लो एंड टॉर्क अच्छा था, बट वो पेट्रोल में शू ऐसे भागती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। टाटा सफारी एडास वर्सेस एसयूवी, व्हिच वन इज बेस्ट? दोनों के एडास अच्छे हैं। 7XO डीजल का क्या प्राइस होगा सर? प्राइसेस अभी डिसकंटिन्यू है, बट प्री जीएसटी होंगे। ओल्ड इनोवा विल रीलॉन्च अगेन सर? नहीं, ऐसा बुलेरो सर ऐसा कोई प्लान नहीं है। 7XO पेट्रोल वर्सेस सफारी पेट्रोल लो रनिंग सर। 7XO पेट्रोल वैसे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो महिंद्रा का एम स्टाइल इंजन है वो बहुत ज़्यादा तेल पीता है। अब आप वो लो रनिंग आपकी कितना आप झेल सकते हो वो बात है। अगर आपको तेल वेल से दिक्कत नहीं है, 7XO पे चले जाओ। बाकी सफारी पेट्रोल की मैंने खुद ने माइलेज निकाली है, इन एंड अराउंड 10 से 15 आप निकाल सकते हो। गाड़ी दोनों ही अच्छी हैं। लुक्स में मुझे पर्सनली जो सफारी है थोड़ी ज़्यादा ऐसा एग्रेसिव लगती है, और XUV 700 मोर लाइक ए फैमिली कार। 25 लाख बजट में क्या कौन सी XUV लेनी चाहिए? XUV 700 उठाइए सर, अपना सेलेक्ट वेरिएंट भी देख सकते हैं, अभी देखते हैं 7XO में आएगा तो वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। सेरा टॉप मॉडल 24.6 का पड़ रहा है, और शुड आई वेट फॉर 7XO? सर अभी 7XO के लिए वेट कर लीजिए, बिकॉज जितने ज़्यादा ऑप्शन है उतने ज़्यादा बेटर रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर सर। प्लीज़ टेक माई नेम, प्रतीक कदू भाई का नाम ले लिया हमने सर। मुझे गाड़ी लेनी है, ले लो XO, वेट करिए 7XO का। विल बुलेरो गेट 2.5 लीटर 4 सिलेंडर? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है इनका सर। आपने ले लिया है तो आप मत वो करिए ना फिर, मतलब दुखी मत हुई सर। मुझे गाड़ी लेनी है, कौन सा लूँ सर? 700 बेस्ट है अभी के लिए, तो अभी डिस्काउंट मिल जाएगी। बाकी 7XO भी आप लोग जो है प्रेफर कर सकते हो, बट वेट करिए सर। ड्राइव कम है तो पेट्रोल इंजन लें या डीजल इंजन लें? XUV7 मैंने प्री बुकिंग की है सर। ड्राइव कम है तो पेट्रोल पे भी जा सकते हो, 15 साल वाली भड़क नहीं रहेगी आप लोगों को। मेन चीज़ तो ये देखो, मैं सही बात तो मैं आपको बताऊं तो आप लोग वो ज़्यादा वेट कर सकते हो। अनिल रुनवाल भाई, बस होने वाली है 7-8 मिनट में लाइव स्टार्ट होने वाली है। मैं क्या सच में? हाँ जी, वो जो अभी इतने दिन से आपको दिख रहा था 7XO का, जैसे लीक डी वीडियो था, अब वो वीडियो तो जो है लीक हो ही चुकी है, एंड गाड़ी भी लीक हो चुकी है। मतलब बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई इतनी हमारी पूरी की पूरी गाड़ी लीक होगी। एंड मुझे तो बस एक चीज़ है कि वो जो जिन सर की तरफ से लीक हुई, वो सर के जॉब के ऊपर कोई भी वो चीज़ ना आई हो। बट लेट्स सी भाई, जो भी है अब क्या कर सकते हैं। 9 मिनट में जो हमारा लाइव स्टार्ट हो जाएगा, तो वो लाइव आप लोग देखिएगा। एंड बस 9 मिनट और फिर दिन द लाइव विल बी स्टार्टेड, आप लोग देख सकते हो। विच इज़ बाय महिंद्रा इज स्पॉइलिंग डिज़ाइन। देखो, ये है कि अब उनको तो गाड़ी के लुक्स चेंज करने ही थे, तो हमारे लिए वो डिज़ाइन स्पॉइल्ड है, बट फॉर महिंद्रा वो डिज़ाइन उनके लिए नया है शायद से। हाँ जी बताइए हुज़ैफा मिर्ज़ा मिर्ज़ा भाई। रेड पेट्रोल भाई, जिमनी डिसकंटिन्यू हो चुकी है कि नहीं? डिसकंटिन्यू नहीं हुई जिमनी। बेस्ट एल्टो 800 और बाकी फीकी है इसके सामने यार। ये तो क्या ही बोलूँ मैं। पंच का टर्बो फेसलिफ्ट भी आने वाला है। हाँ जी, टर्बो आई टर्बो आएगा पंच में। विच इज़ मोर पावरफुल, सवारी पेट्रोल एक्सयू पेट्रोल? XUV 700 पेट्रोल इज मोर पावरफुल। हेरियर पेट्रोल कैसी है? अच्छी गाड़ी काफ़ी। XL6 या आर्टिका ले कार कौन सा बेस्ट है? XL6 दोनों का लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि मारुति सुजुकी इज़ लॉन्चिंग 2026 में एक नई अपनी MPV, यानी कि आर्टिगा और XL6 जैसी एक नई गाड़ी लेके आ रहे हो। किया कारेंस एंड हुंडई अल्काजार के उस पर तो आप लोग वेट कर सकते हो। एडास सफारी पेट्रोल वर्सेस सर? एडास का तो देखो कैसे बताऊँ, दोनों ही अच्छे हैं, मैं दोनों चला रखे, दोनों ने अपना प्रॉपरली वर्क करा है।
हैरियर पेट्रोल लेनी चाहिए। X7XO बेटर है या सेरा? मुझे परचेज करनी है फॉर लद्दाख ट्रिप। सर सेरा इज़ ऑल्सो गुड, बट 7XO और सेरा का कंपैरिजन नहीं। रीज़न बीइंग सेरा जो है वो क्रेटा सेगमेंट में आ जाती है, 7XO जो है सफारी सेगमेंट में आती है, तो क्वेश्चन इज थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट। वाई कंपनी डिडंट रिटेन 700 विद 7XO ने रिटेन स्कॉर्पियो क्लासिक एंड हैड स्कॉर्पियन? रीज़न बीइंग क्योंकि XUV 700 और 7XO एक ही प्रोडक्ट है। स्कॉर्पियो क्लासिक स्कॉर्पियन दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है, आप खुद देखिए ना। दोनों प्रोडक्ट्स की सिर्फ ग्रिल अलग है, पीछे के लुक्स अलग है, इंटीरियर अलग है। स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियन दोनों अलग प्रोडक्ट है, एक बॉक्सी हो गया, एक थोड़ा सा लंबा हो गया, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ऑफ रोड के लिए कौन सा गाड़ी बेस्ट है? ऑफ रोड के लिए थार ले लो जी भाई। 25 लाख बजट में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? XUV 700 लो। सर मैं रनिंग 50 to 20K पर मैक्स ईयर, विच वन इज़ बेटर, पेट्रोल और डीजल? 50-20 हज़ार। सर डीजल पे जाइए फिर तो। वाई कंपनी डिडंट रिटेन 7 बता दिया आपको, ऑफ रोड के लिए बता दिया, टर्बो मॉडल बता दिया। चलिए बस अब 6-7 मिनट और फिर ये लाइव अपनी जो है हम लोग वो उस पर आ जाएंगे, जो आपकी एक्चुअल लाइव है। 6 मिनट और फिर जो गाड़ी है वो लॉन्च हो जाएगी, एंड वी होप कि आप लोगों को मैं जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर पाया हूँ। 6 मिनट और देन फिर द लाइव विल बी स्टार्टेड अगेन फॉर यू गाइस, है ना? तो डाउट लिख दीजिए बस 2-3 मिनट और, फिर तो हम हो जाएंगे। गजब गजब हो गया भैया, लाइव स्टार्ट होने वाली है बस। थैंक यू, वेलकम जी वेलकम। सर 15 लाख में कार्स बताइए, 50 किलोमीटर रनिंग है डेली। अरे डेली रनिंग 50,000, अच्छा 50, सॉरी। क्रेटा एंड सेल्टोस। लद्दाख ट्रिप के लिए 7XO पेट्रोल और डीजल मैनुअल? पेट्रोल ले लीजिए, अच्छी है। थैंक यू। टाटा सफारी पेट्रोल, थैंक यू सर। सर 15 लाख में बता दीजिए 7XO बेस मॉडल कितने का आएगा ऑन रोड प्राइस? डीजल प्राइसेस अभी नहीं है, सो देखिए कोई लेटेस्ट मॉडल कब आएगा? मई में आने वाला है एक MPV मारुति का। गुड वर्क ब्रो, थैंक यू सर। हाउ अबाउट न्यू सेल्टोस डीजल? ले सकते हो सर, बढ़िया गाड़ी है, सेल्टोस इज अ गुड कार। अंडर 15 लाख आप टाटा सेरा कंसिडर कर सकते हो, और सेरा अगर आपको सही लग रही है तो। बाकी सेल्टोस और क्रेटा से तो मेरे हिसाब से इस रेंज में कोई गाड़ी ऐसी होगी जो बढ़िया नहीं होगी शायद से। लाइव वाटर टेस्टिंग, फ्रंट की डिज़ाइन बकवास है। अरे लाइव वाटर टेस्टिंग किस चीज़ की? पंच का बोलो, पंच की है वीडियो ही नहीं है सर, ये पंच का कैसे बताएं? बट चलिए आने वाली है पंच, अभी आपकी 13 तारीख को आ जाएगी, उसकी वीडियो आ जाएगी। ओके थैंक यू बहुत हैप्पी न्यू ईयर सर, आपको भी थैंक यू। लाइव डोंट बाय द टाटा प्रोडक्ट्स, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। नहीं ऐसा सच नहीं है सर, टाटा हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। जब से इन लोगों ने अपना नया 2.0 स्ट्रैटेजी निकाली है, दे हैव इम्प्रूव्ड सीरियसली अ लॉट। तो ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं कि भाई डोंट बाय टाटा कार्स, बट चलिए आपके साथ कोई इनका गलत हो रहा है तो आप टाटा को कंप्लेंट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, तो है ना? बस अब जो है अपनी 5 मिनट में लाइव स्टार्ट होने वाली है। 5 मिनट के बाद आपको मेरी बकबक नहीं सुनेगी। अभी शायद आप लोग कह रहे हो कि भाई बहुत देर से बोले जा रहा है। खैर 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 गाइस, एक दो डाउट्स और ले लेते हैं अपने। भाई लेकिन 700 थी यार। हाँ यार वो तो है, 700 अच्छी गाड़ी थी, अभी आज तक बढ़िया लगती थी। प्लीज़ आंसर MG हेक्टर पेट्रोल कैसी है? सर इट्स अ गुड कार, थोड़ी सी ज़्यादा ऑयल कंज्यूमिंग है। सर B6 2025 मॉडल विद ऑफर, और शुड आई वेट फॉर 2026? सर B6 ले लो, कोई अपडेट नहीं है, बहुत बढ़िया है। 2025 उठाओ, 2026 में रजिस्टर कराओ। क्या ईवी लेनी चाहिए 500 किलोमीटर डेली में? बिल्कुल ले लो, सही है वैसे, पर 50 किलोमीटर तो बहुत कम है, आप पेट्रोल डीजल पे भी जा सकते हो। 7XO 6 सीटर, यस वेलकम। फॉर्चुनर जैसी बल्कि गाड़ी 2025, फॉर्चुनर स्कॉर्पियन लो भाई, अगर फॉर्चुनर जैसी 20-25 लाख में बल्कि गाड़ी चाहिए तो। क्या महिंद्रा 4.3 लेंथ पेट्रोल इंजन में कोई कार लॉन्च कर सकती है? 4.3 मीटर लेंथ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन में? 4.3 में तो कोई भी नहीं इनके पास। हाइट ये लोग नहीं, थार रॉक ज़रूर टेस्ट कर रहे हैं, एंड आई बिलीव बहुत इसके हाइपोथेटिकल है वैसे, रेयर चांसेस हैं, बट देर आर चांसेस कि भाई ये जो नई वाली हमारी महिंद्रा थार रॉक्स टेस्ट कर रही है 1.5 लीटर डीजल में आ जाए, फिर तो प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे। हर्ष भाई XUV 7XO में वेटिंग होगी? बिल्कुल होगी सर, 100% होगी वेटिंग। वेटिंग नहीं महिंद्रा की कार में, तो महिंद्रा की कार चलती थोड़ी ना है। ये लोग तो स्टार्टिंग में वेटिंग करा देते हैं, दैट्स अ स्ट्रैटेजी दे बिलीव।
25 से 27 लाख में स्पेशियस 7 सीटर डीजल विद गुड माइलेज प्लीज सजेस्ट। XUV 700 टाटा सफारी डीजल दोनों। भाई बोलो 7XO का वीडियो कभी आएगा? बस सर 3 मिनट और फिर XUV 700 का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के सामने। महिंद्रा वर्सेस टाटा, दिल पर हाथ रख के बोलो भाई। यार फॉर मी टाटा, रीज़न बीइंग टाटा ने हर बार छोटे छोटे अपडेट्स करती रहती है आए दिन। एंड महिंद्रा इसलिए नहीं, मतलब महिंद्रा भी अच्छी है, मैं महिंद्रा थार ओनर हूँ खुद, बट व्हाट आई बिलीव एज अ कस्टमर परस्पेक्टिव इज़ कि टाटा मोटर्स की सर्विस पहले अच्छी नहीं थी, बट अब उनने अपनी सर्विस काफ़ी सुधार ली है। तो हम लोगों के मन में वही डाउट है आज तक कि भाई इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो हम वही चीज़ पे बिलीव करते रहते हैं, बट नहीं, टाटा मोटर्स हैज सीरियसली इंप्रूव्ड अ लॉट एंड महिंद्रा इज ऑल्सो डूइंग गुड। ये दोनों अपनी इंडियन ही कार हैं। XUV 900 इनकमिंग सेज लीक्स, नहीं कोई XUV 900 वगैरह यार, इतनी सारी गाड़ी नहीं है महिंद्रा के पास, अभी हैं थोड़ी बहुत, बट ऐसा नहीं होगा। टाटा सिरो लूँ या सेल्टोस लूँ? सर सेरा ले सकते हो, सेल्टोस इज ऑल्सो गुड कार, बट सेरा इज़ मच बेटर आई बिलीव। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट में जो है अब अपनी लाइव स्टार्ट होने वाली है एंड फिर जो है आप लोग, अब एक सेकेंड, बस सर एक सेकेंड में आपकी जो लाइव है वो स्टार्ट हो जाएगी। Evening, everyone. A very happy new year to you and your loved ones. What a great way to start the year. We've gotten a bit delayed because of the incoming flights, many of them, but it's never too late to make a good start. Last year, we've had a very, very exciting year, not just for Mahindra, but for the auto industry. It has kept all of us very busy. And we want to be able to continue that momentum in this year also. And for that, we're making a start with a big bang, the launch of the XUV 7XO. And to take the proceedings further, I would like to invite on stage our very dear Velu. Over to you, Velu. Good evening. Wish you a very happy new year. The Chief Marketing Officer threw us out to 2021. I was wondering what she has thrown us to. And let's see what she has done it. Wow, she put so many numbers. How do I interpret these numbers? So 1.1%, 29% and 23%. So let's start 1.1.
That's something UV2 category from F15 to F19. And if we were living in F19, we would have imagined, oh, at best you will go to 2.1%. But something different happened. There's some X factor came in the UV segment. Probably that is called as XUV 7XO, and that's what she is thrown us at. So what happened after that? 29% in the EV2 CAGR growth, and in the SUV category it is 23%. Isn't it amazing? And probably she has done the right thing. What happened was, there's an admiration from all the journos. There's a love from customers, and there is a celebration from the financial analysts and investors. And the reason is, the journalists showered us with 40 plus applauds and awards, winning the ICOTY award after 21 years, and 5.5 billion revenue. This is the fastest SUV to clock 50,000 crores. Admired, loved, and celebrated. XUV 7XO. We talked to customers who loved us. Of course, the journalists are there. The dealers who sell the cars are there. But we want to bring the customers to here. And let's hear what these customers say about the XUV 7XO. From owning a 4-seater to owning a 7-seater, life has evolved. A very touching thing for me was when I got retired. So it was 3 generations of my family receiving the new car. I had the 500 for a long time, and moving to the 700 was a no-brainer. I didn't even take a test drive. Ended up taking the same color, the same number. It's a new car, but in some way, that old identity is also there. Definitely I made it. I think within 10 years I've been able to move into a luxury segment. I think I've arrived. We have a dog that we travel with. We built a special bed for the dog which goes into the rear seat. She is very, very happy in the car. We take her out, open the door, she knows what to do. She goes straight in. Well, I'm a retired guy. I want comfort while I'm driving. For my age, this car is... it gives me all the pleasure. Just because I don't drive does not mean that, the advantages of sitting in a luxury car should be taken away from me. Even after driving for 10, 11 hours, there was no strain on the driver. I was perfectly fine. Could have gone another 300 kilometers. So. When the first time when I sat in the car, the huge screen, the sunroof, it gave me very close to what my cockpit experience is. The engine is remarkable. It is as competitive as any other foreign brand which we have been having in this country. It was a no-brainer for me to take a decision that I would like to go for an Indian brand. You're seated at a height where you can actually see the top of every car around you. When you drive the XUV, basically, most of the people, they move to the side, give you way. It actually gives you a king of the road experience. यार जब गाड़ी सड़क पे चलती है ना तो मजा आता है. You like the way people ride. I think that gives you a high. You saw the aspirations. You saw the baby girl loving the car, and the Mimi sitting in the second row. We need to do something. The champions never rest. They reset. And now asked me, Velu, what are you going to do? What are you going to reset
for those customers who have experienced for 4 years. Pradap Guru put the boundary conditions. Well, this is what I am giving you to reset. A Talon. When I was talking to Manjari, she asked me, I will give you the pride to MRV. And in a common man statement, you have to define the right. It's most complex topics. You take a vehicle, you go through the roads, you get undulated roads. In the highways, you have waviness, and you have rough roads. The body starts reacting to that, and that gets to the floor and seat and the steering. That's what you feel as a ride. Also, the body starts rolling, that we call it a roll. It can start pitching as you brake and accelerate, and it can also yaw when you steer it. That's called body motions. You will be surprised, all of these are controlled by only 10 millimeter of the damper. Only 10 millimeter of the damper. But if you make that 10 millimeter of the damper soft, but when it goes to high-speed cornering, and when you go and hit the lip of the pothole which has 300 millimeters, the whole vehicle will sink and topple. In order to take care of high-speed cornering, and the pothole, when the vehicle hits the pothole, that it has to have the firmness, you jack up the force at the low speeds. You start increasing the force at very low travels, and that does not give the ride. 2.5 years ago, we gave this problem to Tenneco and to the MRV engineers, and we said, we have to come up with something to the passive suspension system the world has not seen so far. And they came and told me, look, I have a possibility to do it, but you have to have the multi-link suspension in the rear. Of course, compared to any competition, 7XO has that multi-link suspension. It's an advantage for us. The center picture shows what the technology is. We call it as Davinci wall technology. And when it integrated with the front and rear suspension, we modified the suspension and we call it as Davinci suspension system, passive suspension system. That takes the world today by surprise. Here is what you see, the performance of it. It's as I said, the conventional damper starts acting as soon as the 0.1 means is roughly 100 millimeters. But everything else is before. It is the zone that you have all the body rolls. And you have to have the very softness here to get the perfect ride. You cannot rise it as the body rolls. And then you start steeply rising. This is the requirement. And this target was met by this suspension, Davinci suspension system and the damper. And at the high speeds where you go and hit the 300 millimeter pothole, you don't want very high forces, and it will be soft when you hit. We call it as rounded. And the conventional damper is a natural, that's how the character is. You cannot get it like this. So we redesigned it and we got it. At the 300 millimeter, when you compress the whole system, you have advanced hydraulic stopper. It gives like after the work is done, you go and land on your rose pedals, and that's how it is. So that's the combination of the suspension damper and the advanced hydraulic stop system that we are introducing. World's first introduction from Tenneco and Mahindra together. Something that Manjari asked me, can you show me, simulate me? How do I see this happening in the rumblers, which is the most
significant movement of the damper, and how these fluids flow inside. If you say this is one of the world's first introduction, I showed it to her, and obviously she said, it looks very theoretical and people like you can understand it. And we have to come with some better test. But look at the DCX, how the ride on the body, it's very, very damped. Personally, I've driven for 6 months. I really feel I go to MSPT from Chennai to MSPT is really fatigue free. You will love it. So the glass inside the cabin was added by Manjuri, and then she said, now you can add the video to the launch. So with this suspension, we got the external agency to measure the vehicle dynamics. We expected that to surpass to 7.9. Obviously we did. It's fun to drive. You will drive it tomorrow. And it's easy to handle. And it's extremely comfortable ride quality. It sets the benchmark for everybody else to aspire to achieve. Once you get a quieter suspension with no noises coming from the road to the cabin becomes really, really quiet. As you can see, up to 2,600 RPM, you get nearly 90 plus or minus 2 articulation index. Articulation index is something that when I'm talking to Pradap Guru, and he is able to hear me 90%, and I am able to hear him 90%, the design and engineering is able to hear it, operating about 90% efficiency. That's the meaning of that. You see for both gasoline and diesel, and it's a benchmark in itself. So one thing I learned in the suspension contributes greatly to the interior noise quality apart from the powertrain. Of course, the powertrain has an exceptional torque, 380 Newton meters for the gasoline, and 2.2 liter diesel has a 450 Newton meter. With this torque, and that's the noise quality that you saw. It's an exceptional performance by any standards. We have suspension system, you have NVH, and you have the performance. Now you need the safety. We wanted to take the safety to the next level, and we found out the Mobileye system generation 4 that we were using, we went to 2 generation ahead, Mobileye 6, IQ6 we call it as. We did 2 changes. The radars that we have mounted currently senses 180 meters ahead, and now we wanted to sense 250 meters. That's 40% improvement. So the radar is able to detect very fast what is ahead. And also you need, if you are sensing ahead, you need the wider field of vision. So we increased by 20%. So coupled with this, it dramatically increases all the ADAS features to a greater extent. Lane centering, lane change assist, and ACC, the advanced cruise control, adaptive cruise control. These are 2 things. And this is aided by the 3.7 times the high resolution camera from 1.7 megapixel to 8 megapixel and 3.5 times more computing. This more computing gives you ML algorithms are introduced in it, so it can detect cows, standing cows. It can detect 2-wheelers more accurately. It brought a lot of things, the static things that it can detect. So this is the first time in the ICE industry in SUV that we bring such an ADAS technology. It's a path-breaking technology that we think you will enjoy it tomorrow. Of course, when you drive it, you can really see it, how the whole system works in the animation. In the driver display system, you get that. This is one of the favorite stuff that people love to see it. Every time
car comes on either side, it will show it to you, and you don't require to probably look at anywhere else, but you just look at the screen. The ADAS system will show you the animation. Standing cars, two-wheelers, standing people, all of them it will detect with this very high accurate camera and the radar. Of course, in the night, the radar helps to see it because it sees longer term. Of course, with the radar, you have to have structurally 70% of the steels used in the BMW is again high-strength steels. No SUV uses to this extent. I was telling to Manjari, and as usual, she's a chief marketing officer. She said, no, you show me in result. And I'm going to show you a video. You look at the door, the driver door of that, because it is a frontal offset, right? At the driver side, the crash is taking place. And that's what happens. Nothing happened to front door. You can open and come out. But what I did, I had one prototype, and Pradap Group gave me that beautiful C-edge the DRLs and the headlamps and the grille, all of them. I damaged it. So I went to the chief creative officer and said, can you recreate for the audience? I have only one prototype. And he said, of course I can do. May I invite him to recreate the magic and show you what digitally he can do? Of course, the design. Thank you. Always listening to Veluguru is a true engineering and science lesson. Even we get to learn what the cars have. So, Happy New Year, everyone, from Mahindra Design and all of us at Mahindra. You know, I'll tell you a little story. When I joined the company in June 21, we were a couple of months away from launch. And, you know, I was really blown away by the 700. You know, Rajesh, Velu, others showed me the car before launch. And it really gave me of anything else, it's athletic in its design language. MRV has put two of the best powertrains available anywhere in the world, I think. And the kind of emotion that generates when you're driving an XUV is truly unique. So it's very difficult to update or redesign a product which has generated so much love in the market. You have to do it very carefully. And so for us, you know, when we started the design, you make sure you keep that iconic proportion and silhouette. That's, you know, what's most recognizable. When you come around the front, the C-shaped DRLs, again, became very iconic. I drive, or you all drive on the roads all over. When you see these DRLs, you instantly, in traffic, you instantly know it's a XUV 700. So we've taken that to the next logical level. You know, this is about familiarity and yet being new. That's very important. The grille is the next sort of element we looked at. It's very powerful, but we've taken that again to a sharper, more bolder execution.
When you look at the side silhouette or actually the stands of the vehicle, we've added a few more, jewel-like elements, both in the wheels and also the cladding. It's all in piano black now, and you'll see that. Just adds that touch of class. And in the rear as well, the XUV is a powerful, wide vehicle. The graphics we've used to design that rear only enhances that. So the 700 basically became the 7XO because there was so much new. I love this bit of the process. You all know, those who know me, the exterior and interior design process is absolutely fascinating. It's still, after 25 years, it still excites me. But it always, as I said, always starts with a sketch that our designers are able to create, something that really grabs you. In some of our design presentations, when we ask we have a small design review team, and everyone gives their opinion, and then we all come to Velu Guru, and he says, "Oh, emotion nahi aaya," So we go back to the drawing board many times on projects. So is that emotion expressed in a sketch like this? Of course, then we make many sketches. We spoke about that talon-like elements on the front grille. It has to look powerful, poised, and not loud. It's that quiet confidence that's very important in an XUV. And of course, the athletic muscle that the body has. This feeling that, it's moving while it's standing still. That to us is fundamental. And you can see how it draws from the original 700, but just moves all the elements a little further, a little more modern. And then this is the kind of final sketch the design team is able to produce. This is what we show Rajesh, Velu, Nal, and this is where we press the button and say, yeah, that's the one, let's go with it. So you can see in the process there's a lot of artistry, there's a lot of heart that goes into creating that. Of course, many people ask, what do designers do? And I always say designers design everything that a normal customer would touch, feel, and sense in a vehicle or in a product. And that means going into every single detail. What is the expression of the lamps? The lamps are like eyes. Eyes are the window to the soul. So the expression of the car is always through those front headlamps. Purposeful, slightly serious. XUV is a little serious, but still has that personality. Like I said, every single detail, these beautiful 19-inch wheels that are absolutely stunning when they're moving, as well as when they're standing still. I think wheels have to look great in both sort of in motion as well as when the car is parked. And there you see it's emerging from the original 700, but every bit as recognizable, every bit as familiar, and yet totally new. There are some images of the exterior. This our digital team puts together. We are able to generate some very high quality images very early in the process, so you know what the car will eventually be like on the road. The interiors. Now, exteriors, I always say sell a car. It's that love at first sight. But the interiors is what keeps you in love. It is really a place where, you spend most of your time with the car is in the interiors. And we take, great care at Mahindra to ensure that the interiors are beautiful. When you open the door, you really feel that you're walking into a special sort of interior, a special space. Of course, we have our signature coast-to-coast 3-screen display, very high quality, very loved already. You've seen this in some of our electric origin BEVs, and we've brought that into the 7XO. Seat comfort. Veluguru will go into some more detail on the materials that we've used and how comfort is paramount, and every seat is important. I always say that if it's a 7-seater or the 6-seater,
every seat is important. Every seat is first class. And we truly believe that. So if you see the third row, there's as much attention and care in designing those, finishing those, as there is in the driver's seat. So we don't treat any of the rows differently. And again, you can see what a light, airy, beautiful cabin you're able to get into in the ICE world. The lighting, mood lighting is very, very important. People love it. And again, you know, that just enhances the feel of the interior of the car. Materials I'll talk a little more about, but this is just some shots of the different rows. Now, CMF, colors, material and finishes is everything that you touch and feel. And we take a lot of care and a lot of pride in designing these. When you, as journalists or bloggers or the ordinary customer gets into the car, you know, we don't want those reactions like, oh, it's plasticky, it's flimsy. So the build quality, the feel of the materials is extremely important, and we design and engineer them actually, you know, very, very carefully. So here you'll see we were inspired by what's happening in the world around us, the world of design. It's not only automotive, there's yachts, there's architecture, there's furniture, and we draw inspiration from that world. Because this is where we see this 7XO, you know, living in this sort of world. So you can see we've created two colors. One is called Lumina, and the other one is called Chestnut Brown, and you'll see that more. And then the design team really goes into the touch, feel, you know, how rough is rough, how smooth is smooth, how soft is soft, how pliable is you know, the leatherette. Everything is actually passes through human hands, you know, and I think that's very, very important. In this world of AI, the human touch is still fundamental, and all of this comes together in creating a beautiful interior and exterior. Someone just asked what's my favorite color on this, and I really love all the colors, but the ruby velvet is very, very special. Okay, and in the end, you know, like I said, we create a little bit of a visualization of the world in which the 7XO customer, you know, would see him or herself. It's a little bit of a fantasy, but of course designers can take that artistic license. And again, the design team creates some very beautiful images and imagery. And this, in fact, many times goes to inform our communication campaign as well. You know, this world that we place the vehicle in. This is very similar to where we are today. We didn't know that at the time we were designing the car. And of course, you can get out into the great outdoors as well. So let me show you a little clip of you know, how we see the 7XO.
power of X or the power of X to the n. How could I have crashed that vehicle? We have many, many vehicles that you will drive tomorrow. The tech. So we now need to put the India's first technologies to make this beauty the beautiful. So what I'm going to show you something, and coast-to-coast screen that we are bringing in, which Pradap Guru has shown you. But we need a controller. So many people asked me, what does this controller do? So I went to the software engineers and the electronics engineer. I asked them, can you explain me in simple terms, what is this power of these controllers, the memory, the RAM? And then they say there is AI power, there is a processing power of graphics, all that. I said, cut the clutter and tell me in very simple terms. One of the brilliant engineers told me that, Velu, there are three things in the screen that you need to worry. One is the resolution. They said you have a typical HD screen, you have 720 pixels, and each pixel you can light up, and that gives the brightness. And you can switch it off, that gives the darkness. But when you switch off, if it is not dark, if it is gray, then the contrast is not good. So you need a wide contrast. It has to be really black, and it has to be really bright. So that's the HDR, the high definition range you have to have. So that's one thing about it. That's about the number of pixels. You can have three variants in it. You can have HD, full HD, and you can have the mother of all, where the Dolby Visions are played. You can have 8.3 megapixels. Number of pixels can be 8.3. In HD, you have 0.93 megapixels. And in a Dolby Vision situation, you have 8.3. That we call it as 4K. 4K is nothing but 4,000 pixels in one row. You have it. That's very simple, isn't it? You have 4,000 pixels and you light it up and you switch it off. It's very simple. I think you got it. Yeah. Then he told me that you put a black color and you put a white color and you put an yellow color and you have to transit between the yellow, green, blue to the red and white. And you have to have such a gradient of colors in small steps that it looks real and natural. This stacking of transition of colors, the dynamic of processing is the most important thing in a display unit. How you take the video from YouTube and you process it and display it. That's why you need such a very high power ECUs. That's called 8 series, which is called 8155. That brings you the 4K capability. You can take a 4K video and you can run it. In the 4K video, you can put a Dolby Vision, and the Dolby Vision gives you the highest contrast and the best brightness and the best darkness. You get it. And you can do it by screen, scene by scene. And within a scene, you can do it for regions. And that's a Dolby Vision. No one in India has tried it. And you know, we have Dolby Atmos, the audio. What about bringing this beautiful experiential technology? And that's what we have brought with this 8155. That's why we need high compute, graphic performance, 10x we have to improve, processing throughput 2.5. The AI compute capability is what you saw, the ADAS simulation that you see it. So that's the use of it, and memory we have to take it. So it's a significantly high power upgrade for the 8155. Therefore, it's India's #1 ICE SUV, has that 8155 powerful chipset. What do you do with this? What do you do with this? Okay, you experience it. Should I go to dealership and can you do me a photo? And can you do me engine and transmission ECUs photo? Yes.
what do? You bring complete change in the communication system. All the ECUs are connected with the Ethernet. What is Ethernet? What is CAN? CAN is something in megabytes. In megabytes, you transmit the data. It takes hours to transmit the data. But the Ethernet is in gigabytes. It just rams the data. That's what is needed to do the photo of all your electronics computers. This car has every ECU can be flashed through photo. That's why we changed to Ethernet architecture, just like we had in BEV. We bring it, and then every app can be independently controlled. Tomorrow when you drive the car, you will see multiple apps. The app that I like the most, the very important app that I like is I go to the app and then I press it. It goes, any city you travel, in that city, where is the doctor, where is the medical facility, where is the theater, and where is the fueling stations, and you press a button, it goes to the person name with the phone number, you press the phone number, it connects you directly. That's the power of this architecture. And beyond this, I don't want to bore you with this physics. But Manjari... And this is also for you to experience in the Harman Kardon booth. So I would really urge all of you to please go visit the Harman Kardon booth that we have here for that experience. One of the things is, you know, when you have such immersive experience and you are driving the car with family in the back seat, there is obviously vehicle noise, there's noise from outside. We have a special capability here, which we call it vehicle noise compensation. What it does is truly identifies the frequencies that are outside the frequencies of your entertainment that is getting played in the car and adjusts for it, compensates for it, so you continue to get the complete immersive experience even when you are driving your car. One of the favorites that we have here, proudly borrowed from our e-SUVs, is the Venue-scapes. And two of the features that I'm going to just show you here is that this is capable of truly giving you the experience of Boston Symphony Orchestra. So can we please have the Boston Symphony experience here? Yes, it is truly elevated from a normal dry audio experience that you get. And this is not all. There are a lot of sports enthusiasts amongst us, and they would have gone to stadiums like Wembley sometime to see some concert or some match. And we do have that in the car through Venue-scapes. Can we have the Wembley experience? Yeah, the reverberation. You can switch on this mode to enjoy your favorite music or concert. So much so for entertainment, it's important, etc. But you know, most of our lives we spend working. We all know that, and it's always work on the go. We are in the middle of either a call, meeting, etc., etc. And to really provide that experience to another level, we have what we call the work on the go mode, where we have BYOD, BOSS mode, and the rear wireless charging, all of you giving a complete office-like experience while you are being driven, and either you are running late for meetings, or you can take meetings while you are on a long commute or on a long drive. But the first thing, you know, I've been talking to a lot of women customers, especially homemakers, mothers who, or you know, people who are entrepreneurs, working mothers. They have time for everything else but themselves. And their pet peeve is that I don't have enough time to get ready when I'm leaving for work or I'm going for a power meeting. We have something called makeup on the go. Of course, enabled by the first to the world Davinci suspension system. It enables you to adjust the co-driver seat and touch up your makeup, very important for women.
That's not all. If you're running late for your meetings, we do have the absolute experience of BYOD and boss mode. Imagine writing notes on your iPad absolutely fluently. And that's not all. If you get stumped by a question from your boss, or you're just curious about something that you want to immediately know, we have an integration with our new best friend, everybody's new best friend these days, ChatGPT, powered by Alexa. So we have integration of Alexa and ChatGPT for first time in India in XUV 7XO that can enable to absolutely effortlessly work, ask questions, make research notes, anything that is capable in ChatGPT can do it through Alexa in XUV 7XO. And all of this, while this entertainment, the theater on the go, the work on the go, all of these tech features are absolutely great. But what if we told you that this can come to you with the comfort of your living room? And that's where we have the luxury part of our seats and everything else that we have in the 7XO. You see the seats, they are first of all made with high density foam, which is not only ensconcing, so it's ergonomically designed, it fits to the contours of your body, but it's also resilient enough to not give way quickly, so it's very long lasting. That's the high density foam, which is the base of our seats. The plush pads, which give you extra comfort and almost like working, pretty much sitting on your sofa kind of an experience. And the ventilated seats, not just front, but rear ventilated seats for the first time in XUV 7XO, which give you the absolute comfort of having cooling down when it is really, really hot. Global warming, we all are facing it. And one of the things that we are really careful, all of us are all about these days, is the UV rays, extra temperature that you can't bear from the windshield. But the XUV 7XO has a solar shield, which gives its occupant a cabin completely wrapped in calm, because it's a specially engineered glass that filters noise, solar heat, and harmful UV rays. And some of the stats are here on the slides, side slides. 7% cooler. We've actually done a ChatGPT on it to figure out that in a 40-degree temperature, 2.8 degrees is actually perceptible to human body. So it's reduction, significant reduction in the temperature within the cabin, 6% less bright, quieter, and filtering the harmful UV rays. And last but not the least, setting your own mood when you are going for a party or out with the family or just on a long drive. You get to set your own mood with the ambient lighting system that we have. 16 million colors to choose from. Good enough to choose that Mera Wala pink? Of course. But what if the rear occupant wants another color? You can choose that as well. The front occupant can choose their own color, the rear occupant can choose their own color, and the dash can also have its own color. So it's a 3 different modes that this ambient lighting is really capable of. It's just not one light. That is why set your own mood for every occupant. And then we also have the Groove Me for those who love rock, to those who love some desi beats. Okay, with all of that, I'm sure you are eager for the most exciting part of this presentation. And for that, I'll hand it over to Nal. Thank you. Hello everyone, how are you all? Just to clarify, I'm not here to dance for the music, by the way. I'm going to talk about the variants here. So, as you know, 7XO, a lot of love has gone into the product, a lot of passion has gone into the product. And we want to make sure so that's what we're talking about when we say X for all. I'm going to spend a couple of minutes talk a little bit about the various different variants. We spent a lot of time talking to customers on what exactly they would want in their vehicles, at what price point they would want it, what are hero features for them, what
what are features we think are very important, but in reality are not very important features for them as well. So I'll spend a couple of minutes talking about the insights we got out of that, and then we'll get into the variant itself. So if you look at the overall market. Hello everyone, how are you all? This 50 lakh, I'll spend a minute on that as well separately. The customer profiles you look at it. The first base of customers is in the 50 to 20 lakh. This is what we call entry to the big league. They're already a car owner. They might be having a hatchback. They might have a CSUV. And they're now wanting to leapfrog to get a 7XO. So that's the phase. First base of customers. They might be looking at a mid-size car, a mid-variant of it. So we really want to give a value proposition for them where they can directly upgrade a leapfrog to a 7-seater as well. So that's the first segment of customers we are looking at. The second one is a little bit of a step up your lifestyle. They've already started to get into the mid-size SUV space. It's a bit of leveling up for them. They might be in the UV1, they might have a sedan. And they're now starting to think about how do I upgrade my lifestyle. A little bit of a bump up, not a lot. And they're looking at a top end of a mid-size SUV or an entry level of a UV2 as well. And the third one, of course, is somebody who already belongs to the big league. And here is a very interesting insight we've gotten. One is, of course, somebody who already has a 7-seater SUV already, or could be somebody who's looking at buying a luxury car, one of the luxury SUVs or luxury sedans to that extent. And in reality, they go back and take a look at the product, and they say, you know what, I actually get a much better product proposition with the XUV 7XO than trying to go into something which is costing me a 50, 60, 70 lakhs to that extent as well. So it's a little bit of folks who are looking at the best product proposition coming down for our product, and then of course the top end of premium SUVs who want pretty much every single feature which is out there as well. So our product portfolio would look like this. Starts with an AX. We have an AX3. AX and AX3 will get into the leapfrog of somebody coming in from the CSUV space. You have the AX5 and AX7. That's literally the heart of our business, and I'll spend a minute on that as well. And then of course you have the AX7 Tech and AX7L. And so folks who are familiar with our XUV 700 portfolio, is there anything missing from, MX? So one of the first things you'll notice is our entire portfolio now is Adrenox powered. Entire portfolio is connected car. So that's the X for all that we're bringing to the table here. I'll spend a couple of minutes in each of the variants, but I'll deviate a little bit from what I normally do. I start with the low-end variant and I'll go up there. 700, if you look at it, more than 80% of the volume we get is the AX7 family. That's really what has captured the imagination of the audience. So I'm going to start with the AX7. Perfect balance of features, perfect balance of luxury, perfect balance of tech to get there. So let's start with AX7. If you look at our AX7, this is where I talked about the customer insights we got to get to this. We wanted to get the distilled set of features which would really appeal to that audience. They're not really trying to aim for getting everything in the car, but really want to compromise as well. So, coast to coast, triple screen, which Velu talked about. You get BYOD here as well. And we do have a car with the screens put in there. So you should experience the BYOD out there as well. You get wireless Android Auto and Apple CarPlay. We've gotten some feedback that takes a delay for us to get our Apple CarPlay and Android Auto. Happy to tell you that the cars from day one are certified for Android Auto and Apple CarPlay. We get leatherette, the pano sunroof, which is much loud in this space. Cruise control, of course. Safety and wellness is important. You always see us talk about safety. I've added wellness to this as well. And some of you folks who come from Delhi, AQI is a big situation there. So we've added a ton of features for purifying the air as well. So a lot of features which can get in there. 540-degree camera comes into the camera at this variant. DVR, another safety feature if you look at it. That gets into this variant as well. And of course, from a design perspective, you get the R18 diamond alloy wheels as well. So that's what AX7 stands for. It's about stepping up the lifestyle. And with that, let's play the AV, please.
So that's the set of features we're bringing for the AX. And as you know, for us, diesel is the mainstay of our portfolio as well. So when I'm putting out the prices, we'll be putting out the price for the diesel manual here. But of course, with the press release, we'll have the entire price list coming out as well. AX7, any guesses? Diesel manual? Yeah. People are a little bit tired, but let's get to the price as well. AX7 diesel manual gets at 18.95. And you'll see some of the features scrolling there. I was told that that entire scrolling takes a minute, so I'm not going to wait for the entire minute for all the features to come out there. But of course, we're going to share with you tomorrow in a booklet on what it looks like. So fantastic price, 18.95. You're not very far from where a mid-variant of a 5-seater 4.3, 4.2 car exists. So a little bit stretch, 15, 20,000, 30,000, and lo and behold, you have an AX7 with you. So it's an amazing price point. Somebody who's really trying to step up there, trying to go up from what would be a mid-size SUV. Perfect opportunity for them to upgrade themselves. So that's AX7 for us. Like I said, the heart of our business, the core of the volumes we get from the AX7 family itself. Now I'm going to start moving from here to the AX7L, which is our top-end variant. We do have something in between, which is AX7 Tech. But let me spend time on the top-end variant, which is AX7L. AX7L is for a customer who pretty much wants everything you can throw for them, right? And it has the Dolby Atmos and Dolby Vision we talked about. It has the ADAS level 2 advanced features, advanced visualization, which Velu talked about as well. It has a 16-speaker Harman Kardon and the experience which Manjari talked about. It has new R19 alloys wheels as well, and like I said, I can keep going on and on. But really, everything that we talked about as a top-end features all gets in here. And there's also something which we see customers, like I said, folks who are starting to look at the luxury SUV space, who are trying to buy a German-made car or a SUV like that, would look at this and say that the product proposition for this at these price points is actually much better than trying to go into a 50 lakh, 60 lakh, 70 lakh price point as well. So that's an audience we have started to tap into. Very excited to get that part of the business coming in as well. So AX7, let's just quickly pay the variant film and then we'll get to the prices. That's the AX7L. People ask me sometimes, what is your favorite feature when you have one of these vehicles? And I got to tell you, in the AX7L, I have 2 teenagers at home. I don't want them to be fighting for who gets the ventilated seat and who doesn't get the ventilators. It's fantastic that all of the 4 seats have ventilated seats as well. So that is something I love. With that, the diesel manual prices, any guesses now? Let me see if I've got the audience excited here. 25, 23. Okay. 22.47 for a diesel manual price point. And again, you can see the scrolling of all the features. And again, this I think goes on for a minute or so.
But really, we have absolutely packed in everything which could be put into the product from a tech perspective, from a luxury perspective, sophistication, the best of what the engineering team could put in there as well. So that's AX7L. And again, one of the things I do want to remind you is both these are introductory prices. In fact, the entire portfolio, the prices we're putting out are introductory prices for the first 40,000 volume. I know it's a big number, but I just want to put it out. It's introductory prices for the first 40,000 volumes of customer deliveries as well. So, like I said, I wanted to start with the AX7 family because it's 80% of volume. It doesn't mean we've forgotten the rest of the variants. Like I said, this is X for all. We want everybody to be excited about the vehicle. So let me talk about the entry variant, which is AX7. AX itself, sorry, AX. So AX, X for all, what does it get? Start with the first set of features. Bi-LED projector headlamps with DRL right up front. Push button start and stop. By the way, there's one of the features our customers have consistently told us that you got to give push button start and stop. It's stakeholder, it's table stakes for us to get there. Cruise control from an entry-level variant. The first variant gets cruise control. Safety, of course, we don't compromise any of the safety features. 75 plus safety features. 6 airbags with curtain airbags all the way back to the third row. Again, one of the category first in this product. Electronic stability control, 17 features as well. That's on safety. Wireless Android CarPlay, I talked about it. Smartwatch connectivity, ChatGPT, which Manjari talked about. All of that comes in. So it's really a connected car right up front. Pretty much all the core features that you want on a smart connected car, you have that. As well. The question prices out first. So with that, let's get started. This one, I'm going to start with the gasoline manual because obviously that's the entry-level variant we're putting out there. And again, these are the introductory prices. Any guesses on this one? Not very far. AX gasoline manual at 13.66. This is pretty much what you would, if you were to go out today and buy a 700, this is the price you're going to pay for an MX variant as well. So you're getting the connected car experience for what you would pay for an MX variant today. That's on the gasoline side. On the diesel side, 14.96 for the diesel variant. As you know, diesel is a huge component for us over here as well. So that's what we had in terms of the features and the product as well. What I'll do now is we'll get the vehicles out for you and we'll talk about it. But before that, let me spend a couple of minutes on the dates itself. So Power of X, as we talked about, X for all. The test drives pretty much start immediately. If you guys can get to the next slide. So we start test drives on 8th January. In fact, the vehicles have started to reach the dealerships as well. You would have seen a couple of leaks which go out in the last couple of days. That's because the vehicles have actually reached the dealerships for a change. It's a good thing because you have customers waiting for the vehicles and we have them for you to start driving as well. Booking starts on 14th Jan. And actually, we've started a pre-booking process on December 14th, if you guys remember. So we actually have a whole bunch of customers who already paid the booking amount and they're actually waiting for the vehicle as well. So we're going to start deliveries of these vehicles for those pre-booking customers. We're going to start deliveries. Not that everybody is going to get it right up front, but at least we're going to start deliveries for those pre-booked customers on 14th Jan, right after that. So no waiting for the vehicle. If you're excited about it, you'll get there. Top-end variants, like I said, AX7 family is our
core part of it. So we'll start with the AX7, and then of course the rest of the variants, which is AX, AX3, and AX5, we're going to start in April. But you're going to start getting vehicles right away. You're going to experience the 7XO right away as well. So that's really what we have there for you folks. And what I'll do now is we'll get all the 3 vehicles. We're going to put 3 vehicles for the photo op. But right after that, please do give us some time. We want to talk a little bit about the event tomorrow, which we have in for you guys. And we'll, of course, talk a little bit about some of the booths we have as well. With that, why don't we get the vehicles out for a photo op, please?